Sorry, तो पहले record started. So I think recording has started. Please always remind me 2-3 Okay, times sir. if I have forgotten, so that it will be helpful for all others, as well as administratively we have to show that we have covered a 1 hour lecture, and that is available in the MS Teams as checked by the VC. That is very important. अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था? देखिए ये हमने कर लिया था. So we were discussing QPSK. We were going from BPSK to QPSK, and we saw that its SNR comes out to be Q into SNR. Now what we do, we try to evaluate our QPSK for the relief trading channel. So instead of, you can do all the mathematics that we have done for BPSK, same will be done for QPSK. There will be no change. But because remember that both QPSK is actually same as BPSK, because QPSK is uh, 2 BPSK, 1 BPSK in the I channel and 1 BPSK in the Q channel. So a short form, a short way that is used to get the probability error analysis of QPSK in Rayleigh channel is that you can just compare BPSK and QPSK probability of error in AWGN channel. And you can very well see that if I replace my SNR by SNR over 2, in that case my AWGN probability of error will become the probability of error of QPSK. So I don't have to do anything. I just replace SNR by SNR over 2 in all the previous derivations of BPSK in Rayleigh channel, and I will get the probability of error. इसमें ये अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप बेशक ये ना इस तरह करें, आप पूरे स्टेप सॉल्व करें, यानी SNR के साथ. जो आप सॉल्व करेंगे तो हर दफ़ा आपको यही नज़र आएगा कि तमाम फार्मूलाज में आप एक्चुअली SNR को 1 SNR over 2 से रिप्लेस कर रहे हैं. सही है. सो अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो था हमारा बीपीएसके के लिए क्या आया था, मतलब अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 1/4 SNR आया था. ठीक है ना, या इसको बिग ऑर्डर आप कह सकते हैं 1/SNR, मगर एग्जैक्ट वैल्यू 1/4 SNR आई थी सारा कुछ करने के बाद. सो यहाँ पे अगर आप SNR को SNR/2 से रिप्लेस करेंगे तो बन जाएगा 2 SNR. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर QPSK इन रेली विल बी इक्वल टू 1/2 SNR. यहाँ पे लिखा हुआ. आपको नहीं यकीन आ रहा, आप पूरा सॉल्व कर लें, जो हमने सारे स्टेप उसके लिए इसके लिए भी करें, आपको वही जवाब आ जाएगा. अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, एंड व्हाट इज दैट? सो इन QPSK वी सेड we are mapping to both the channels, I and Q channels, so that we have imaginary and real. A is imaginary and real both. All right. Acha, he says the question arises in an engineer's mind, especially in a communication engineer or wireless engineer mind, that especially for wireless engineer, because we are studying Rayleigh channels which are not available for wireline channels. So he says that instead of using QPSK where I have to use both the Q channel, where I have to use both the I channel, which means that I have to use two multipliers, one with sine, one with cos, and then they go, and then I have to use 2 low pass filters to get the signal on the in phase and the quadrature phase. So it is a little bit expensive. Why not I send my 4 symbols on an I channel, and that will be called a 4 PAM channel. Okay? Instead of sending 4 channels in such a way, 4 symbols in 2 channels, where we know that each symbol has a I and a Q channel part, why not I send 4 symbols on the same I channel? This is a very good question. Is this good? Is this bad? How can I compare? This is the question. Acha. So, first of all, let us see what is 4 PAM. So, you could see that QPSK has its 4 symbols in both in I and Q channel, and PAM has all its symbols. This is 4 PAM.
So it also has its 4 symbols only in the I channel or the real line. Okay. And so you know these symbols, this will be at b plus bj, this will be at minus b plus bj, this will be minus b minus bj, and so on. While these symbols will be b, this will be 3b, this will be minus b, and this will be minus 3b. So I am placing all my 4 symbols on a single line. All right, this is what we have done here. सर Now, सिंबल इंडिविजुअल बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. symbol individual bit को represent कर. It is not necessary. It might be that a symbol represents individual bit. It might be that 8 bits are represented by a single symbol, or 4 bits are represented by a single symbol. So it all depends on the modulation techniques that you are adopting. Okay, sir. For BPSK, you can see 1 symbol, 1 bit. But for QPSK, you can very well see that your 1 symbol is actually corresponding to 2 bits, because you will be seeing 1 bit in I channel and 1 bit in Q channel. So your 1 symbol will be representing 2 bits. Alright. Similarly, in 4PAM, you can also see that as you have 4 symbols, you have 1, 2, 3, 4 symbols. So each symbol could represent 2 bits. This could be 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, just for simplicity. So as you go to higher constellations, these are called constellations. Okay? As you go to higher constellations, the symbols start representing more number of bits. Now, question which we want to discuss here is actually that why not send all the 4 symbols in the I channel, like a 4PAM symbol which I just showed you. First of all, we have to find its average error probability, and the problem is that at present times 4PAM is not taught in the undergrad course, but this time as I am teaching this course, so Dr. Mohammed Tahir, our senior professor, has instructed, so this time we will be teaching 4PAM, as well as all other campuses have been informed. But for this present class, you know, as you have said the previous course, so we have to go through 4PAM a little bit, so that I can give you the derivation of the probability of error of a 4PAM, a 4PAM modulation scheme in an AWGN channel. All right. So I will be utilizing the previous book, as well as I will be utilizing my notes, because again, you know, there are mathematical complexities or equations are not well represented in the book. So we just want to have a short description so that we just understand. Now please see that what are the symbols. Now the symbols are minus 3b, minus b, b, and 3b. Now what is the power of these symbols, or you can say energy per complex symbol? No problem. Just take the square of the amplitudes, you get the power, and the power is equal to energy per complex symbol. So I know we are sending them in I channel, but they will be called complex number, because in the Q channel you are sending none symbols, that is why its energy is, or its power is 0. This will be 9b square, this will be b square, this will be b square, and this will also be called 9b square. Alright. Now the signal that will be received at the receiver in an AW channel will be either of these bits. You could have sent minus 3b, you could have sent minus b plus b, or plus 3b. So it could be any of these mb's. M represents minus 3, minus 1, plus 1, or plus 3, plus w. This is a real channel. You don't have to go to the Q channel. This is already real, so the noise will be simple Gaussian random variable with 0 and not by 2. Noise will be simply like this, 0 and not by 2. But this will be MB, where M will go from minus 3 to 3. Now, before I go to this equation, a very good explanation is given in the book. So you will take the book explanation, then we will come back to our notes. Now he says, so I want to find the probability of error. Okay.
he has taken this diagram to make some sense. All right. So these are the signal points. These S, which are in my my calculation with respect to the book here. So these are my points BBB, and these center points. These are the thresholds. As you saw, we saw a threshold in an AWGN channel for BPSK. The threshold, if minus 3 and minus B, they are equally likely, will be exactly in between minus 3B and minus B. The threshold between minus B and plus B will be exactly in between at 0, provided B and plus B were equally likely. And this, came from the famous Bayes rule and all that we studied in the previous lectures. So between plus B and 3B will be exactly in the center, provided B and 3B, they come with equal probability. The decision making, the border line will be exactly in between. So here you can see that these are my symbols and these are the borders, taus, or you can say thresholds. All right. So if a signal comes here, so because it is away from this, we will decide that this symbol has been sent. If a signal comes here, we will decide that this has been sent. Similarly, you can see any signal that falls in some region, it will either go to this S or this signal point or this or this. Okay? And in this way, we can say that this symbol has been sent based on the signal that has been received. Again, you can see the minimum distance bound is being used. Whatever point is at the minimum to the signal point, that signal point will be selected as the received symbol. सर टॉ डिले ये टॉ जोन सा थ्रेशोल्ड, इस बुक ने थ्रेशोल्ड दिया हुआ, मगर इसने बड़ी ख़राब सी एक्सप्लेनेशन इसकी। वैसे मैं इसने थ्रेशोल्ड दिया हुआ, ठीक है। हम मेरे नोट्स में बहुत साफ सुथरा है। मेरे नोट्स में क्या होगा, मेरे नोट्स में इसका थ्रेशोल्ड क्या होगा, 0 होगा। इसका क्या होगा, b + 3b डिवाइडेड बाई 2 होगा, दरमियान वाला। यस सर। हाँ, ऐसे क्या कोई इतना कोई करने की जरूरत नहीं, हमने कोई इस बुक को फॉलो नहीं करना, हमने बस बुक को जो अच्छी चीज़ें वो ले रहे हैं, बाकी बुरी चीज़ हम खुद ही कर रहे हैं। Now, so what is the error? When the error will occur? So what does it mean? The average probability is simply the probability the noise variable exceeds magnitude 1/2 the distance between the levels. So if the noise is greater than 1/2 the distance, then your point will not fall in this point, will fall in the other half. So then you will have an error. Now you can see that those points which are in between, they can have error two ways, right side and left side. But those 2 points which are at the end, they can have error only in one direction. ठीक है, इसको आप दोनों तरह समझ लें। हम मेरी अगर आपने देखना है नोट्स, तो उसमें ये है, लेकिन अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, फिर तो कोई झगड़ा है ही नहीं, उसने तो होना ही +3b का है। अगर कोई पॉइंट इधर आ रहा है तो कोई झगड़ा नहीं, उसने तो लास्ट वन -3b का होना है। हाँ, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसमें दोनों के झगड़े चलते रहेंगे कि -b में जाएगा या -3b में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका भी होगा कि मैंने +b में जाना है, -3 में जाना है। तो यहाँ पे तो आपका कॉन्टेस्ट है, यहाँ भी कॉन्टेस्ट है, मगर इस रीजन में और इस रीजन में कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं है। तो कंटेस्टिंग पॉइंट्स आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 हैं, अगर हम 4 पैम की बात करें, ठीक है। तो उनमें से आप देखेंगे 2 पॉइंट्स जो हैं उनमें तो कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं, बाकी 3 जो कॉन्टेस्टेड एरियाज हैं वहाँ पे वाकईतन कॉन्टेस्ट है between 2 signal points where the signal can go this way or the signal can go this way after our detection, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि so all the center points, so how many center points, if I have total number of m points, then m minus 2 will be the center points, all right, and 2 will be always those points which will be at the border for a PAM system, ठीक है। So m minus 2 over m gives you the probability, and 2 over m gives the probability of those points following in those end regions, and m minus 2 over m gives the probability of the points following in the between regions, ठीक है। Now in the between regions, you will have probability of error, provided y is the receive signal, minus sm, this is the signal point, provided this difference is greater than the midpoint. But there is a mod sign. Mod means both ways it could happen, plus or minus. Okay. And here, this will be only an error if y minus sm is just greater than t. All right. So Sorry, there is no mod here.
जी हाँ, क्या कह रहे हैं? इसको फिगर से प्लीज रिलेट करके बता दें, मुझे ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। हाँ, वो मैं अभी आपको करता हूँ, ओके सर। वो मैं अपने नोट से करूँगा, वो ज़्यादा अच्छे हैं। जी ये जी तो सर। मैं आपको बस ना, ये मैं चाह रहा हूँ कि ना यहाँ तक मैं पहुँचा दूँ आपको, ठीक है। इसके बाद सारी कैलकुलेशन हमने ना अपने नोट से ही करनी, तो इससे ना बहुत से स्टेप्स मिस कर दिए। आपको पता है बुक में ज़्यादा, मतलब बुक में भी बहुत से स्टेप्स मिस एक्सपेक्शन होते हैं। मेथड सर किया होगा। हाँ, इसने मिस काफ़ी किया, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप बस यहाँ तक एक दफ़ा कर लें कि डेरिवेशन, उसके बाद जो बाकी मैथ है वो हम लोग वहीं करेंगे, वहाँ पे आपको सारा समझ भी आ जाएगा, सारी कुछ कैलकुलेशन जी। यहाँ बस अभी आपने समझना है कि जो बीच के पॉइंट्स है ना, उनमें मॉड आएगा, क्योंकि उसमें पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी जा सकता है, किसी भी एसएम के तक, इधर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मगर जो एंड में पॉइंट्स हैं उन्हें सिर्फ एक दफ़ा ही जाना है, ठीक है। तो ये बस आपको समझना। अब ये क्या हुआ कि ये जो था, इसको आप लिख सकते हैं एज इट इज कि ये मॉड का सिंगल पॉइंट है, ठीक है। तो उस केस में ये 1/m हो जाएगा और यहाँ पे मॉड आ जाएगा। तो जब आप 1/m को इससे ऐड करके, क्योंकि दोनों का आर्ग्यूमेंट तो सेम हो चुका है, ये भी मॉड हो गया, ये भी मॉड हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो m-2 और m प्लस 1/m, तो ये हो जाएगा m-1/m p मॉड ऑफ y माइनस sm ग्रेटर देन d। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताना था कि क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर m-1m p y माइनस sm ग्रेटर देन d आता है इन दोनों इक्वेशन से। इसके बाद ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद वो हम नोट्स पे आ रहे हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ से देखिए, वही चीज़ है। अब ये थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए m-1m मैंने वहीं से लेके आ गया। अब ये थोड़ा हम डिटेल समझ रहे हैं। सिग्नल मेरा वहाँ y की जगह यहाँ पे r हो गया, ठीक है। रिसीव सिग्नल मेरा r है, MB मेरा मिड पॉइंट, यानी रिसीव मेरा MB यानी वो पॉइंट है जिससे मैंने फासला देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने MB भेजा है। यहाँ मैं थोड़ा डिटेल डाल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ गिवन MB था, मैंने MB ही भेजा था, मैंने फासला निकाला रिसीव सिग्नल का अपने MB के साथ, क्योंकि मुझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए ना, ठीक है। तो जो फासला था रिसीव पॉइंट का MB के साथ, अगर वो फासला उसका मॉड लेने तो फासला आएगा ना, रिसीव सिग्नल का MB से जब आप डिफरेंस देंगे तो आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगा जो R और MB के दरमियान है। मॉड ले लिया जाए पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, आपके पास मॉड वैल्यू आ रही है, इसका डायरेक्ट फासला आ रहा है सिर्फ, ठीक है। चाहे ये नेगेटिव हो चाहे ये पॉजिटिव, जो भी इसकी वैल्यू होगी आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, चाहे वो नेगेटिव में है पॉजिटिव में, आपको मॉड डिफरेंस आ रहा है ना। इफ दिस डिफरेंस, ये जरा गौर से, अगर वो ग्रेटर है MB और MB के नेक्स्ट हायर पॉइंट, देखिए ये MB है, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा m+2 ओवर b, m+2 इंटू b। क्यों? फर्स्ट को m मेरा 1 था तो ये होगा 1b, तो अगला पॉइंट क्या होगा 1+2 3b होगा, ठीक हो गया 3b। तो 1b और 3b डिवाइड बाई 2, देखिए उनका मिड पॉइंट आ गया। अगर आपका फासला 1b से इतना ज्यादा है कि वो जो सेंटर पॉइंट है 1b और 3b से क्रॉस कर जाता है, तो फिर तो आपकी डिडक्शन होगी 3b की और आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में आ जाएंगे, ठीक है। और ये बोथ साइड्स को मैंने इसमें मॉड डालने से बोथ साइड्स को मैंने कवर कर दिया, ठीक है। कि राइट साइड में भी मसला हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी मसला हो सकता है, वो भी आपको नजर आ जाएगा कैसे। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने कहा कि ये सारा तो वैसे ही, इसको थोड़ा सा खोल लें तो ये हो जाएगा MB प्लस 2B। तो MB दो दफ़ा आ गए, तो 2MB प्लस 2B और 2 कट गया तो MB प्लस B रह गया। इसको आप लिख सकते हैं B इंटू M+1 गिवन MB, ठीक है। अच्छा, अब आपको मॉड की कंफ्यूजन थी ना, मॉड भी मैंने खोल दिया यहाँ पे, बुक ने सारा घपला किया, मैंने सारा हर चीज़ क्लियर कर दी। कैसे खोलना है आपने कहना है कि जी R-MB मॉड होता क्या है। हाँ जी, ये क्या होता है, ये होता है R-MB प्लस का मॉड, तो प्लस ही रहा। तो होता है जी R-MB माइनस भी तो हो सकता है और उसका मॉड तो पॉजिटिव होगा, मगर R-MB इटसेल्फ जो था वो नेगेटिव था। तो दोनों को केस को आपको केटर करना पड़ेगा, ठीक है जी, दोनों को केटर कर लें। तो पहले आपने कहा जी प्लस है, प्लस में आपने कहा R-MB प्लस है तो पूरा प्लस है, उसका मॉड भी प्लस ही होगा, तो टोटल प्लस इज ग्रेटर देन, ये तो वही रहा ना B, ये तो यहाँ से ऊपर से आ रहा है, B कॉमन हो गया M+1 और गिवन MB, वो तो हमें पता था गिवन MB, वो आप बेशक बाहर ले जाए, मगर यहाँ पे लिखें प्रॉपर कि हमें पता है गिवन MB था, उसके साथ से हम एरर निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया R-MB इज ग्रेटर देन दिस थिंग। अब दूसरा क्या होगा,
दूसरा विल बी दैट आर माइनस एम बी इज टोटली नेगेटिव, बाहर इसके नेगेटिव आ रहा है, आर माइनस एम बी मॉड लिया ना, एक होगा आर माइनस एम बी पॉजिटिव, एक होगा आर माइनस एम बी नेगेटिव. ऑलराइट, दिस विल बी आर माइनस एम बी नेगेटिव, but r minus mb negative is greater than this, so you can multiply throughout by negative sign, negative goes positive, this becomes r minus mb positive, negative goes here, this sign will change from greater to less than minus bm plus 1. तो ये उसकी दूसरी साइड आ गई. ठीक है, दोनों साइड्स आपने किसी भी नंबर के दोनों साइड्स को कवर करना है, इस तरह से आपने दोनों साइड्स को कवर कर लिया. ठीक हो गया. अब हमने कहा कि भाई जाहिर है आपके पास एक एडिटिव गॉसियन नॉइज है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन दोनों साइड्स पे सिमेट्रिक है, सो आई कैन ऐड दीज टू प्रोबेबिलिटीज एंड रिप्रेजेंट 2 टाइम्स m minus 1 over m एंड जस्ट रिप्रेजेंट वन एरर. मैंने एक ले लिया इनमें से, जो कि दूसरा ही इसकी तरह था, इसमें कोई खास फर्क नहीं, वो तो वही चीज़ है, बस ये कि जरा थ्रेशोल्ड चेंज हो गया और आपकी वैल्यूज को दूसरे थ्रेशोल्ड से देख रहे हैं, मगर सिमेट्रिक है, दोनों की प्रॉपर्टीज दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो आई कैन राइट दिस एज डबल. तो ये डबल आर माइनस एम बी ग्रेटर देन बी एम प्लस 1 आ गया. अब सवाल है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए. कोई मसला नहीं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कब होगा? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग ग्रेटर होगी दिस थिंग से. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग है क्या चीज़? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर माइनस एम बी है क्या चीज़? यहाँ पे याद है कि गिवन के आपने भेजा था एम बी भेजा था. ठीक है, तो हमें पता है कि ये क्या है, ये गिवन एम बी था, इसका मतलब एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बन रही थी, तो जिसकी मीन वैल्यू एम बी थी, और जो एक जिसकी स्टैंडर्ड नॉइज डेविएशन एन नॉट बाई 2 थी, तो एक जो बेसिकली एम बी प्लस डब्ल्यू आपका बेसिकली पूरा रिसीव सिग्नल है, इसका मीन एम बी है और इसकी जो वेरियंस है वो नॉइज से गिवन है, विच इज 0 एन नॉट बाई 2. तो इसका मतलब आर आपका क्या है? आर आपका एक एम बी मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि जब जीरो में जब ये ऐड करेंगे तो एम बी हो जाएगा इसका मीन, ये हो जाएगा एम बी एन नॉट बाई 2, जिसका वेरियंस जो है वो एन नॉट बाई 2 है. तो जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालूंगा आर माइनस एम बी का, तो मुझे पता होगा, आप देख लें आर माइनस एम बी क्या बना, आर माइनस एम बी करेंगे तो वो नॉइज ही बन गई. ठीक है, आर माइनस एम बी नॉइज हो गई. ठीक है, और हमने आर माइनस एम बी का ही सारा रपड़ा था कि जी आर माइनस एम बी ये डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस जो है मिड पॉइंट से बड़ा है, छोटा है. मेरा आर माइनस एम बी जो एक नॉइजी का रैंडम वेरिएबल, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन बी प्लस एम प्लस बी. व्हाट इज आर माइनस एम बी? It is a Gaussian random variable r minus mb whole square divided by its variance 2 n naught by 2, noise is its variance, and so I need to be greater than b m plus 1 for there be to error. I have to be greater than b plus m plus 1, so I will put these limits in b m plus 1 and I will go up to infinity, and this will be e minus r minus mb variance 2 into n naught by 2, variance of noise n naught by 2, 2 sigma square, 2 n naught by 2 cancels, and this will be 2 pi n naught by 2, 2 pi sigma square is n naught by 2, so all of this comes. Okay, we cannot solve this like this, because we now want to make it skew function, we have to use change of variables. So I use new variables x, which is equal to r minus mb over under root n naught by 2, and I use d of x, which will become d of r, because d of mb is 0 because mb was just a constant. So x is equal to this thing. Why the words d of x will be equal to dr over under root n naught by 2. Now changing the variables, you can see this thing, r minus mb under root n naught by 2 whole square will now become x,
and this 2 will be there. This will be E minus x square. And similarly this thing, because you can see that dx is this, so dr will be replaced by dx into under root this thing. This will come out to be dx into under root this thing divided by this, and this n naught will cancel, and you will have this thing. Now you can see you are in a standard Gaussian form. Sigma square is 1 and mean of this is 0. And you can see this is my lower limit. Lower limit was actually bm plus 1, but you will put bm plus 1 instead of r, and then your limit will come out to b over under root n naught by 2. So my limits goes from here to here, and this is a standard Gaussian random variable, so I can just put the q function with the start of the integration as we have done before, q over b over under root n naught by 2. 2m minus 1 over m will be here, it will be also here. Under root comes common, this becomes 2b square over n naught times 2m minus 1. Here you know m is equal to 4, this becomes 2 to the power of 3 over 2 q of 2b square over n naught. So we have driven that this will be 3 over 2 q of under root 2b square over n naught for a PAM. And now you can see here 3 over 2 2b square over n naught. So we have proven that for m is equal to 4, probability of PAM, probability of A will be this value. सर एक क्वेश्चन है। पूछें सर, ये m-1 कैसे आया था ये बता दें। हाँ, वो मेरा इसीलिए ना वो आपको इस बुक से करवाया, लेकिन 2 ओवर एम मेरा, इसको आप रख सकते हैं 1 ओवर एम और इसको आप कर दे मॉड, क्योंकि मॉड का मतलब है बोथ साइड्स का, और बोथ साइड्स की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली बराबर है सिंगल साइड के, मतलब कि बोथ साइड्स की प्रोबेबिलिटी डबल है सिंगल साइड की प्रोबेबिलिटी की। ये तो सिंगल साइड के साथ डबल था ना, क्योंकि एंड के पॉइंट्स में डबल आता है, एंड के पॉइंट में सिर्फ सिंगल सिंगल आता है, इसलिए उसने यहाँ पे सिर्फ मॉड भी नहीं लिखा था, उसको 2 लिखा है, क्योंकि 2 पॉइंट्स आपके एंड में। आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर एम, मगर इसको आपको मॉड करना पड़ेगा ताकि बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन आप डाल दें। ओके सर। फिर आप जब m माइनस 2 ओवर m प्लस 1 ओवर m करेंगे तो -2 + 1 -1 रह जाएगा, तो m माइनस 1 ओवर m आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा अभी यहाँ पढ़ते फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है कि दिस इज फॉर 4 PAM to achieve approximately same error probability as QPSK, the argument inside the Q function should be the same as in 3.25. Now 3.25 was the error function or probability of error in AWGN for QPSK. You can see in 3.25 you had 2a square over n naught, while here you have 2b square over n naught. So if you want to keep the same error of probability, so we must have b is equal to a. All right, let us do that. We assume that b is equal to a, so that this is also you can neglect this CO2, actually all depends on this thing because this is just a constant. Main bounding, you know, for a Q function is the exponential function, which is actually exponential square of whatever the argument, e of x square, you can see in the previous discussion. That is why we will be interested in this term in the arguments of Q. We keep both same, so that probability of error is same, but there is a inside, there is a problem here, subtle or difficult point to understand. And what is that? All right, b is equal to a, no problem, but QPSK requires transfer energy of 2a square per symbol. and अब यार 2a square क्यों था? क्योंकि दो सिंबल भेज रहा है ना, एक q में एक i में, q में भी a square भेजेगा, एनर्जी चाहिए इसको, और i में भी इसको a square की एनर्जी चाहिए पर सिंबल, ये पावर चाहिए, तो टोटल पावर तो इसकी 2a square है।
जबकि पैम में कितनी एनर्जी है? पैम में 5b² है। अब आप कहेंगे सर 5b² कैसे आया? उसके लिए आप इधर आ जाए। देखिए इसकी एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, एवरेज कैसे निकाली जाएगी? आपके हैं एनर्जी ऑफ बीपीएस के, अच्छा एनर्जी ऑफ पैम कैसे निकाल, एनर्जी ऑफ बीपीएस की तो आपको समझ आ गया ना भाई, वो तो a² + 2a² हो गया। हर सिंबल में 2 जा रहे हैं, 2a² ही होगा ना पर सिंबल। अब 4 पैम की आप कैसे निकालेंगे, वो मैंने यहाँ निकाला। देखें 2 सिंबल्स तो आपके हैं b² वाले, तो उनकी एनर्जी 2b² होगी या पावर कह लें। और जो 2 सिंबल्स हैं वो आपके खड़े हुए हैं 3b पे, उनकी एनर्जी कितनी हो गई 3² b²। मैं क्या कर रहा हूँ? Alright, so this will be 2b² and this will be 3b², this will be 9b². This is coming 2 times, this is also 2 times, so this 18, this 2, this becomes 20b², and average energy divided by 4, there are 4 symbols, so average energy comes out to be 5b². While you could see here that average energy was there 2a², or you can say 2b², but here it is 5b². So the energy is how much greater? It is 5b over 2b, 2.5 times, or 10 log 2.5 comes out to be roughly 4 dB. So you can see here that the energy requirements for PAM to give the same probability of error as QPSK is 2.5 times more, or 4 dB worse performance. You need 4 dB more energy. And you can see in exercises that if you increase the constellation size and if you just pack on the I channel, you will require more and more energy for a given probability of error. Now this gives us a very, very, very important result, and that is that if you want to pack efficiently for a desired minimum distance, then always remember that number of constellation points in higher dimensional space than in lower dimensional space. You will always try to pack your numbers in higher dimensional space. Always try to use I and Q rather than just using one dimensional space or I. And a very good design principle, a communication channel, a good communication channel will exploit all the available degrees of freedom in the channel. It is always better to use I and Q rather than just using I. Or as a general rule, if you have different ways of sending a signal, try to send the signal through as much diverse path or available degrees of freedom as much possible. That will be giving you a better communication system. So this is a very fundamental concept of wireless engineering or communication engineering. And here we are just talking about I and IQ. So we have arrived at principle that it is always better to send in a signal in both the channels. Now if I ask you about what was happening for non-coherent, we saw a non-coherent orthogonal scheme. One of you said that, sir, there we are sending only one symbol in 2 time slots. Okay? And there it was also not it was totally real. All right, so there you are also using one real dimension per 2 symbol times. If you compare this scheme with a new scheme, it's called differential BPSK, in which
You can also demodulate it with non-coherent demodulation. Do not require the channel. Here what happens that the information symbol is +1 and -1. And the transmitter symbol at any time m is given by this symbol times the previous symbol. So you can show its demodulation non-coherently. This is also in the exercise. Some students have done also this problem, but this is in your exercise. You can copy this. So you will see that a differential BPSK, and if it is demodulated non-coherently, is same as the orthogonal scheme. So you have a 3 dB loss as compared to coherent BPSK. So coherent BPSK, in which H is 3 dB better than as compared to differential BPSK. But we also saw that orthogonal was also 3 dB less than coherent BPSK, if you remember in the last lecture. So we can say, all right, very good. Orthogonal and differential, they are both same, but all right, they are same with respect to energy requirements, but they are still not same because differential is better, because differential is utilizing one symbol in one bit in one symbol time. But in there you were actually sending in 2 symbol times, you were just sending one information. Or in orthogonal, if you could remember, one has to be a 0. So here you are using one real dimension. Yes, you are using only the I channel in differential BPSK per single symbol time. In one symbol time you are using one real dimension. All right. But in orthogonal, if you could remember, you are sending half of the signal. While in orthogonal, if you could remember, you were sending you just to send one real signal, you need 2 symbol times. All right. So that is why your data rate was half, or your spectral efficiency was half. So we can say the differential BPSK is better as compared to orthogonal because it uses available degrees of freedom more efficiently. So now we have summarized all the schemes here in this diagram, in this table, which we'll be going through. So alright, some are more efficiently packed than other, for example QPSK and COM and all others. टाइम ओवर हो गया. तो भाई मैं तो सारा मैच को 2:15 तक पढ़ा रहा हूँ, फिर या तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा बाद में. मेरा लगे 2:15 तक, क्योंकि मैंने ना आपको पहले ही बताया कि मैंने इसलिए वो किया था कि बार बार इनसे पूछा, इन्होंने अभी भी मुझे बताया, इससे पहले भी ऐसा ईमेल भी नहीं आई. तो आपने जाना, चले जाए, बल ये रिकॉर्ड होगा 2:15 तक. चलिए ठीक है सर, मैं देखता हूँ क्लास अगर शुरू होती है तो मैं फिर स्विच करता हूँ. So we can see that signals are spectrally efficient. Some schemes are more spectrally efficient. For example, QPSK is efficient as compared to BPSK, or it is more efficient as compared to especially PAM, or differential BPSK is more efficient as compared to orthogonal schemes. But they are still bad because you can see the probability of error for all of them is of the order of 1/SNR. And we have seen previously that the root cause of this poor performance is that for a reliable communication, it depends on the strength of the signal, single signal path, and there is a significant probability then this path will be in deep fade. When this is in deep fade, then you will get large amount of errors. So what is the natural solution? The natural solution is that you send these symbols through multiple signal paths. Okay, and each of these paths must fade independently. Very important. So that if one path is fading, the other path is still there, and that is why
you will still be able to get your signal from some reliable point. This is called the famous diversity techniques, and diversity can increase the performance over fading channels. So there are various diversity techniques that we'll be studying. The first diversity techniques will be over time. So you can send a symbol now, then in another coherence time, in another independent time, you can send the same symbol. You can also code the symbol as if, for example, you were coding like in orthogonal scheme. You can use different type of coding, and then you can use interleaving. Interleaving is that you send the symbols in different coherence times, so that they are independent with respect to one another. So even if in one coherence time you have a deep fade, you are destructive interference, then definitely the next coherence time you will be not in that phase, and you will get good copies of your faded symbols in other coherence time. Second is the frequency. You can exploit the frequency. The channel has to be frequency selective. So even if one frequency is down, the other replica in another frequency which is away with respect to the coherence bandwidth, it is away in another coherence bandwidth, and hence it will be independently fading. You can get another good copy. Third thing with respect to space, so you can use your antennas which are sufficiently spaced apart. They have a lot of space between them. So even if the signal is failing from one, the other antenna, it will not fail because they are away with respect to the coherence distance. And there are in cellular networks at network level, you can use micro diversity. For example, you say the signal is coming from two base stations. So even if the signal is failing from one base station, the other gives the signal, and hence you have several types of diversity. And we will be discussing time, frequency, and space here. And in all of them, we will be starting with the repetition coding. Repetition coding means it's the most simplest coding scheme, in which if you have the information symbol, you just repeat the information symbol one time, or let us say 4 times, or 5 times, or 6 times. Okay? So this is called coding. So instead of sending one symbol, you are sending, let us say, this is same symbol 10 times, 10 repetitions. All right. So this is called repetition coding. So, and it will give us the maximum diversity gain, but you will be seeing that it will be quite wasteful of the degrees of freedom. And we have other sophisticated schemes that will be increasing the data rate, but as well as they will also be giving us the coding gain. And again, in all of this subsequent discussions, we will be assuming that we have coherent channels. We know the channel coefficients by the use of the pilots, and we know this all depends on the coherence time. You need to, we saw in the last lecture, the coherence time, let us say roughly for 2G system, it was for 80 symbols. So once you have found the channel, it will remain same for 80 symbols, and then it will change, and you can use again the pilot channel to find those new channels. And it will depend, on the coherence time, time frame you have to find the channel coefficient, and the receive power of the transmitted signal. So this is a little bit about, comparison. So we are comparing coherent and non-coherent schemes in so it is just like bits per second per hertz is just like bits per complex symbol time. अब आपने ये समझना, bits per एग्जाम में बहुत दफा आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको पहले ही बताया, इट इज जस्ट लाइक, अगर कहेंगे बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज, इंडस्ट्री में भी पूछा जाता है आपसे, हाँ जी फलानी स्कीम है तो इसकी बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज रेट क्या है। अब बच्चे कहेंगे यार क्या बिट्स पर सेकंड भी फिर हर्ट्ज भी है, क्या चक्कर है, हर्ट्ज और सेकंड आपस में वो होते हैं, क्या कहते हैं जी, इन्वर्स होते हैं, तो ये क्या चक्कर, ये सिर्फ एक नोटेशन है, मकसद बताने का है कि जैसे लिखा बिट्स पर एक सिंबल टाइम में आप कितने बिट्स भेज रहे हैं। वैसे बीपीएसके में आपने एक बिट भेज रहे थे, आप +1 या -1, तो एक सिंबल एक ही बिट लेके जा रहा था, मगर क्यूपीएसके में आपने एक सिंबल प्लस ए माइनस ए के बराबर था, तो वो 2 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, ऑर्थोगोनल तो बिल्कुल ही था, ऑर्थोगोनल में तो आप हाफ बिट भेज, हाफ इंफॉर्मेशन भेज रहे थे, क्योंकि 2 आएंगे, एक 1 0 आएगा तो वो एक्स ए बनेगा, और एक 0 बन जाएगा तो एक्स बी, फिर जाके एक इन्फॉर्मेशन की इक्वेशन
डिटेक्शन होगी, तो वो तो हाफ आपका रेट हो गया था, ठीक है। सो नंबर ऑफ बिट्स पर कॉम्प्लेक्स सिंबल टाइम, इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स सिंबल है वो होता है टाइम और फ्रिक्वेंसी, इसीलिए इसके लिए पर सेकंड पर हर्ट्ज लिखा जाता है, मगर एक्चुअली आप सादा समझें कि बिट्स पर जो भी आपका सिंबल कॉम्प्लेक्स टाइम है उसमें आप कितने भेज रहे हैं, ठीक है। फॉर्म पैम में भी आप 2 भेज रहे हैं, हालांकि आप रियल में, मगर आप कहेंगे 2 बिट्स पर कॉम्प्लेक्स टाइम, क्योंकि आप हर एक सिंबल में, ठीक है, आप नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, मगर वो तो आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं यूटिलाइज किया क्यू को, आप सिर्फ आई को रख रहे हैं, हम तो कॉम्प्लेक्स में ही देखेंगे, आपके पास तो था ये आपके पास, यू हैड द अपॉर्चुनिटी, यू कुड हैव सेंड इन द कॉम्प्लेक्स चैनल और द क्यू चैनल, so we will be checking your number of bits sent in complex symbol time. डिफरेंशियल क्यूपीएस के भी आप देख सकते हैं, वो 3dB वर्ड्स होते हैं कोरेंट क्यूपीएस के, एंड नाउ यू कैन सी दीज वैल्यूज, ये तो सारों के 1/SNR आ रहे हैं, हमने कुछ के ड्राइव कर लिए हैं, कोरेंट वीपीएस के और कोरेंट क्यूपीएस के जो तो हमने कहा हाफ हो जाता है, बाकी इनके आप खुद से कर सकते हैं, तो इतने मुश्किल नहीं है, पर इससे नहीं किया हुआ आपने करना अपनी तौर पे कर लें, मगर असल चीज़ ये समझ डेटा रेट, देखिए इसका 1 था, इसका 2 हो गया, इसका 2 और इसका 4, चूंकि ये है 16 कॉम, 16 कॉम का मतलब है कि 16 सिंबल्स हैं, इसका मतलब एक सिंबल 4 बिट्स को रिप्रेजेंट, 2 to the power 4 is equal to 16, तो वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नॉन ऑर्थोगोनल का हाफ था, क्योंकि आप आधी बिट भेज रहे हैं, जो 2 जाएंगी तो फिर 1 बिट डिकोड होगी, डिफरेंशियल में भी आप हर वक्त 1 भेजे जा रहे हैं, ये जो ये सारी नॉन ऑर्थोगोनल नॉन कोरेंट स्कीम्स हैं, और डिफरेंशियल क्यूपीएस के कोहेरेंट एक सर, कोहेरेंट जी जी एक मिनट, डिफरेंशियल क्यूपीएस के भी नॉन कोरेंट की बात हो रही है, तो उसमें भी आप 2 भेज सकते हैं, क्यूपीएस के मतलब 2 सिंबल वैसे ही भेज सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको इन सब स्कीम में आपको एच का पता नहीं होता, ठीक है, और इन स्कीम में आपको एच का पता होता है। अब आप सवाल पूछें क्या कह रहे हैं। सर, जो कोहेरेंट बीपीएस के है उसमें 2 to raise power 0 है, तो मतलब कि हम बिट भेज ही नहीं रहे। हैं सर 2 to raise power n है ना फार्मूला को, और n शो कर रहा है कि कितनी बिट्स मैंने हम तो भेज। नहीं, मैंने तो वो तो अब यार अल्लाह के बंदे, वो तो होता है सिंबल्स और बिट्स का रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये जो चीज़ आपको बताई जा रही है कोहेरेंट बीपीएस के, वो 1 बिट भेज रहा है ना एक सिंबल में, क्यूपीएस के वो 2 क्यों भेज रहा है, क्योंकि उसके बाद 4 सिंबल्स हैं, 4 सिंबल्स बराबर हैं 2 to the power 2 2 के, तो इसका मतलब है कि आपने 2 बिट्स, ठीक है, 2 बिट्स में 000110 और 11 हो सकता है, तो जाहिर इसका मतलब आपके पास 4 डिफरेंट सिंबल्स आप भेज सकते हैं, और हर सिंबल में आपको 2 बिट्स निकल आएंगी। अब 4 पैम में भी ऐसे ही होगा, 16 को आपने आपको 00040, फिर 111141, और इस तरह से आपको 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं, तो 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन 16 सिंबल्स बन जाएंगे, मगर यहाँ पे तो आपने बस, आप तो खाली यही भेज सकते हैं, +1 या -1 ही भेजते हैं बीपीएसके में, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा या 1, तो एक ही बिट आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जी। ठीक है? मतलब कि सर मैं अगर 2 to raise power अगर डाटा रेट बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज कर लूँ, तो मैं ये बता सकता हूँ मेरे पास टोटल कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं। हाँ, पर सिंबल, पर जी, पर कॉम्प्लेक्स सिंबल, हाँ, सर बीपीएसके में तो एक कॉम्प्लेक्स ही आएगा। सिंबल जी। सर हम तो रियल टाइम एक्सिस को क्वाड्रेचर में नहीं स्टडी कर रहे, जब हम n0/2 भी कह रहे थे, एन यानी नॉट बाई जितने भी एन नॉट, जितने भी सिंबल्स है वो रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। हाँ रियल एक्सिस पे होंगे, खाली रियल होगी तो फिर n0/2 होगा, और जी अगर तो आपने इमेजिनरी भी डाल दिया तो फिर n0/2 दो दफा आ जाएगा, एक n0/2 होगा, एक n0/2 जे वाला होगा, जी ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नॉइज बन जाएगी सर्कुलर सिमेट्रिक। सर, और कॉम्प्लेक्स अगर सिंबल टाइप से क्या मुराद है इसका, यानी उसमें। कॉम्प्लेक्स नॉइज अभी हमने पहले पढ़ा ना चैप्टर, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में, जी जी। जिसमें नॉइजेस 2 होती है ना, एक रियल में भी होती है और और कॉम्प्लेक्स में एक भी होती ठीक। है। चलिए थोड़ा सा देख लें, 1 मिनट तो है। टाइम डाइवर्सिटी, सो अब ये कि टाइम डाइवर्सिटी कैसे मिलेगी हमें, ठीक है, पहली चीज़ टाइम, ये 2G में खाली टाइम डाइवर्सिटी यूज़ हो रही थी, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अच्छा आपको समझ आएगा। वो कह रहे हैं कि चैनल का कोरेंस टाइम जो है ना, उमन 10 to 100 ऑफ सिंबल, हम देखा तो उसका कोई 80 सिंबल्स आया था, मगर बहुत दफ़ा 200-300 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप ऑफ योर coherence time with respect to droplet spread, and then coherence time with respect to symbol time, so it could be channel is highly correlated across, चलिए टाइम आपका पूरा हो गया,
If you have any questions, you can ask before I will end the lecture. So already you have no questions, so I will end the lecture and the recording. So next time it will be from 1 to 2. All right. So no सर problem. आपके काउंसलिंग ऑफिस आवर्स वो बता दें, रमज़ान के टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है? हाँ, वो वही मैंने आपको बताया, बुध को ही रखें फिर 1 1 to से 3 सर। 3:30. हाँ 1 to 3. 1 to सर पहले 3:30. कब तक कर दें आपको? हाँ वही वेडनेसडे को ही होगा 1 से 3:30. मैं आऊँ तो यूनिवर्सिटी में था, इस दफ़ा मैं गया भी नहीं यूनिवर्सिटी, तो ये वो हालात ख़राब थे, लोग कहे जी वो पता नहीं वो सड़कों में पत्थर वत्थर मार देंगे, तो मैंने गया नहीं, वरना मैं वेडनेसडे को यूनिवर्सिटी में होता हूँ, तो आप लोग आ सकते हैं पूछने के लिए, या फिर वही तरीका आप MS टीम पे, मतलब इसमें फिर ये कि आप कोऑर्डिनेट कर लें कि मैं आपको लैपटॉप खुला और आपसे बात हो सके, वरना मैं ऑफिस में चलिए सर होता हूँ. ठीक है, हम आपको सेल फोन पे इन्फॉर्म करेंगे। ठीक. अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़.